Okay, can we start? Yes, please. Okay. So this topic is power of mind and meditation. Yes. So how many people are there? Five. Okay, four. They will be So all can we joining start? soon. Yeah. Uh, so let's start with a question first. How many people meditate? All four of us? Yeah, hello. Yes. I'm not getting any answers. Yes, we do. Like I think all four of us. Okay. Because we regularly have meditation, Maven sessions, like Yeah, even in consciously pausing. fine. So the power of meditation, but we directly come to the point that like you can't use the word power. It's going to happen. Even if you don't want it, it is going to come if you meditate. And definitely the mind is going to go deeper, or then you can say grow higher and higher, because as you meditate, the nerves are going to open up, the blood cells are going to get more activated, the flow is going to become more regular. So all the things are all interrelated, and it is going to happen as you sit down calmly. And definitely, as the mind, for example, like when you're meditating, you all know that mind becomes a bit calm. Okay, the body becomes stable. Means at a certain point, like you are like you don't even feel like uh, moving your fingers, or maybe automatically it happens. Like you are in a state where you are unable to move yourself physically also. So that time automatically the power starts rising. There's no need to say that it is going to increase or not, at what level and what not. It all that thing depends upon the time you have given, or then the past karmas, as always. They both are going to play a big role in meditation. Okay. So if the past karmas, like for example, in the past you have meditated, or in the past birth or whatever, then it is going to carry on, as all enlightened people say. Whatever you've done, you're going to carry. So it is going to come when you're sitting. Suppose you are a first timer and you may start meditating, you are unable to. But as you go deeper with every step, like you'll find your rhythm, what back you had, because it will all come to you. And from there again you rise. Power of meditation means, so there is everything. You can't say one thing, because your mind gets sharper, where you are able to like your memory becomes sharp. You are able to concentrate more, confidence level increases. It's all everything, all in all, like it's going to increase. uh, as always, there is one sentence from me in all the time where I would like spoken practice. That is the main thing. So when you sit down, I would just suggest one thing, like in initial stages, when you sit to meditate, you should be like, it would be better if it is a lonely place or a silent room where there is less noise or no noise. So that would be far better, because people do get distracted. 99% people will get distracted. So the initial suggestion, to create that space in your mind, that calmness, silence is needed. Okay, so that you are not distracted looking here and there, or then whether there is something outside the window or not, or whatever. Like, because we all are not that great. We'll start directly and we get all the things. So that's the first point. And as you sit down, the first point, like as you sit down to meditate, the first thing is you realize in the first session only that something has happened, because he or she has never done it in his life.
Okay. So they will start doing it. They will find something amazing. Oh, बहुत अच्छा लगा. That is the World Cup. This is what always we hear from people. But it was not अच्छा लगा. It was going to happen because you did it, you done that. You practiced that much. You sat down for that 20, 30, 40 minutes. So definitely अच्छा तो लगना ही है. There is no question about it. So now the power of mind and meditation. This is how the subject runs. If you meditate, the mind will grow. Means I told you in all aspects, like may it be concentration, may it be intuition, may it be confidence, sharpness of the memory. It all happens because the whole mind is becoming calm, our body is becoming calm, stable, the flow is becoming in a very distinct, like we can say in a positive way, the blood flow, the cells. Of course, they also slow down after a certain time. Because meditation means what? Like you are going to be becoming calmer and calmer. You are going into a state where there is nothing. Okay, doing nothing, just stability, just calmness, just zeroness, vacuum. So that is going to create immense of energy. Okay, they are going to give you a lot of energy. As I had one of my lectures, I told like even 10 seconds of proper meditation will give you energy full of day. I mean, that was back some three, four lectures back. I don't remember that exactly, but I told. So, if you are able to create that vacuum or that zeroness or that perfect state of meditation, even for 10, 20 seconds, then it will be immense energy for the full day. So, let's imagine what would happen if you do it for a minute properly or 5 minutes properly. It's going to be too much, I would say. And those who have done it, they all know the results. So, and those who have not done it, please try it. So you'll automatically know what I mean to say. The energy levels are going to increase, and if you are able to really sit stable, also, like I know thoughts come whenever you sit, definitely there will be thoughts coming every moment, hundreds of thoughts coming in seconds, like, but slowly and gradually they will diminish because you get used to it. And this energy can be used for any purpose, to heal people, to sharpen your memory, like to remember things, especially for students or people who have to like remember immense of things, like the whole agenda, data, and all. Like so, it helps you, and even physically also, like you can heal yourself also with that energy. So the energy is going to come, but at the same time, as I always say, that pranayama also plays a very important role, rhythmic breathing, and if that is like connected with your meditation, then it will work wonders, and definitely you will get results because intuition will increase, power of thinking will increase, everything will increase parallelly, and you are able to create or do certain things which other people are unable to do. So I would just suggest people that all, like, from a small child also, like till the age of that whatever it is, if you're not done, start it, and if you're doing it, better go for a longer period, and practice more and more, like to it's like the more you do, the more you get. And if you get like if you feel stressed out or like tired of it, then you're going somewhere wrong, because that passion should increase. Of course there are limitations, because we all have some daily course, daily work. We have our jobs, professions, businesses, household work, everything, but then we have to remove some time for that. You can't say that अरे टाइम नहीं मिला, है ना? अगर टाइम नहीं मिला तो पावर भी नहीं मिलेगा, एनर्जी भी नहीं मिलेगी। आपको वही फिजिकल एनर्जी और वही जो खाना है, जो मेडिसिन लेते हो शायद,
उस पे ही आपका पावर चलता रहेगा 30 प्लस वैसा, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। दिस इज समथिंग व्हाट यू गेट फ्रॉम द universe, from the atmosphere, from the oxygen you breathe, from the way you are stable. So it's so very natural. There are no points or nothing like I have to like share like okay 1 2 3 4 5 ऐसा माइंड का होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा मेडिटेशन करेगा नहीं. It all goes hand in hand. It is going to come all or go away all. But it doesn't go. It will always come because once you start sitting, it is going to be very positive. You're going to acquire, absorb something from outside on the inside, and inside everything is available. The subconscious mind is the largest and the best supermarket. Okay, so where every product is available of thought, of power, of intuition, of God, everything. So it's up to you how much you want. So you're going to sit down first of all, and maybe we are discussing just randomly, but there is no like organized way of thinking about it. The thing is like, let's start all over again. Like once again, I'm telling you, when you sit down, suppose you're sitting down to meditate. For beginners, I would say object meditation is better. You can like keep in front rose or then your uh, faith, whomever you believe, the photo of that, or then you can even put up a candle if it is a bit darker. The room is darker enough, and you can do a little bit of Turatak or what they call gazing. Okay. Maybe initially 1 to 5 minutes, because after that it will create weakness in your eyes or your body. You may feel that weakness immediately. So the beginners, I would say, you can do like that also. And at the same time, if your teacher or your guidance, like whoever is your mentor, he guides you in a proper way of breathing, so that will help you to decrease the uh, stress or that weakness. He will also, the teacher may guide you about the food things also, like what intake you have to take and not, for better results. If you are doing it, you are going to get it. Very simple, as always. The power of mind and meditation both go in hand, as I say. Uh, as I have given you 4 or 5 examples, like confidence, concentration, um, sharpness of your memory is always there, then your intuitions increase. Okay, first thing, you'll start being calmer automatically. If you're doing it properly, then no need to like, people will not be like, nobody have to guide you for that, that become stable, become calm. It is all going to happen automatically. Let me tell you first, if you are doing it properly, there is no need of anyone like teaching you or telling you to shant ho jao and all those things. Automatically you come to know inside what you are doing, whether it is right, wrong, and you go stable, you become calmer within moments. That happens automatically. Okay. So Hemant ji, very often we get distracted, like yes, so yes, the mind get distracted, and even in meditation, sometimes we get distracted. So how to come back to that? Because sometimes it also, yes, the break yeah, could be for days. yeah, So yeah. yeah. It often happens with me, everyone. Let me tell you, we are not great saints yet. We are just starters. You can say the first step. So definitely, because what we live in a material world, we have our own family, friends, foes, everyone. Okay, दोस्ती है तो कोई तो किसी पे गुस्सा है, किसी पे क्या है, तो ये सब साथ में माइंड में पूरा चलता रहता है, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स. तो डेफिनेटली मेडिटेट करते हुए कुछ ना कुछ सामने आएगा ना. जैसे हम लोग अभी आप लोग जैसे फिल्टर का पानी पीते हो तो पूरा क्लीन आता है, बराबर है. आप डायरेक्ट टैप से लोगे तो शायद थोड़ा सा कचरा भी मिल जाए या कुछ काला, वो ग्लास भरेगा तो आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ उभर आया है, अंदर है कुछ. तो वैसे ही माइंड का भी है. वो क्या करेगा जब बैठेगा मेडिटेट करने को, तो आपका जितना बैकलॉग है थॉट्स का, वो
सबसे ज्यादा जो सता रहा है या सबसे ज्यादा जो हैप्पी कर रहा है, वो उभर के आना ही है सामने। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज नॉट योर फॉल्ट। दैट इज नॉट योर फॉल्ट, दैट इज नॉट गॉड्स फॉल्ट, nobody's fault. We are just, it is just a flow. Try to understand, it is just a flow is happening. At that time, instead of getting distracted, just means उसको ऑब्जर्व करो, वो मूवमेंट को ऑब्जर्व करो, वो थॉट को। और जैसे कि एक एग्जांपल, बहुत सिंपल और इजी एग्जांपल जो रजनीश जी ने दिया था, भगवान रजनीश जी, वो एकदम मस्त एग्जांपल है कि आप, जैसे आप स्टेशन पे बैठे हो, एक प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, तो अभी फॉर एग्जांपल ट्रेन इज कमिंग बाय, तो आपके सामने से वो पास हो रही, तो आप क्या कर सकते हो? आप बैठे हो तो उठ के वो ट्रेन के पास तो नहीं जाओगे ना, या उसको हाथ लगाने की कोशिश तो नहीं करोगे। आप दूर से ही देखोगे, वो आई, फास्ट ट्रेन है, चली गई, स्लो ट्रेन है, रुकी और फिर चली गई, लेकिन आप वही चेयर पे रह जाते हो, है ना? तो माइंड का भी ऐसा ही है, ऐसे थॉट्स आते रहेंगे, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। इट हैज टू कम एंड गो, इट विल हैपन, एंड इट हैज टू हैपन बिकॉज यू आर ह्यूमन। यू आर नॉट अ मशीन की ऑफ कर दिया स्विच, ऐसे नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर टेक्निक्स टू डू दैट आल्सो, बट इट टेक्स टाइम, इट इज नॉट दैट इजी। तो वो वक्त पे आप ये डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए आप ध्यान नहीं देंगे, आप उसको ऑब्जर्व करो। मैं तो बोलता हूँ उसको बराबर से देखो, वो थॉट कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है, उसको जाने दो ट्रेन की तरह। बाद में फिर से सब साफ हो जाएगा, सामने पूरा दिखाई देगा। दैट मीन्स यू आर अगेन ओपनड अप into that zone of meditation. So that will be a very easy thing to do. And means once you follow this example, I think that distraction will go away within a few moments or maybe a few sessions, whatever it is. And then you'll find that even watching that train means, or watching that thought pass by, will become a meditation. Okay. But at the same time, if you have grown enough, like you've done enough of meditation and enough of pranayam and all those things, and maybe your intellect is powerful, and if you think about that thought at that time, see, this is a confusion, huh? Properly, like try to understand, when you are into that thought, when you are meditating, and you try to indulge with that, with good or bad thought, good or bad ideas, then if the mind is powerful enough, then that is bound to happen, chances बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, मेरे को एक थॉट आता है, मैं किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ, और मैं सेम टाइम पे मेडिटेशन कर रहा हूँ, अपना प्राणायाम कर रहा हूँ, क्या होगा? जो थॉट में मैं घुस जाऊंगा, है ना? तो वो थॉट को मैं सोचूंगा कि इसका, मैं इसको कुछ बुरा बोलूँ या अच्छा बोलूँ या लेट गो करूँ, तो वो होने का चांसेस बढ़ जाता है 70, 80, 90% अपॉन योर पावर ऑफ इंटेलेक्ट और पावर ऑफ थॉट फोर्स दैट इज देयर इनसाइड यू। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट वन थिंग, कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बेस्ट है कि यहाँ पर लेट गो करो, ऑब्जर्वर रहो बस, बी अ गुड स्पेक्टेटर फॉर दैट थॉट, that will neutralize the thing, and you'll carry on ahead with the meditation. The process will be there, going on and on. So automatically that distraction will go away. Again, you become calm. If you are a proper observer, then at that time also you won't get that distraction or that anger or that happiness or whatever. कुछ भी नहीं, बिकॉज मेडिटेशन का मतलब ही वो है ना, कि ना तो हंसना है ना रोना है आपको, आपको तो सिर्फ ऑब्जर्व करना है या शांत बैठना है ना। तो हम हमको तो वहीं पहुंचना है, उस जोन में पहुंचोगे तो ही सब मजा ज्यादा रहेगा ना। मजा मीन्स everybody experiences, those who are sitting in meditation, they have been getting that experiences. So no need of explaining that, I feel. And if you need explanation, we can go deeper, that is not an issue. But definitely this is the answer for it, man. uh, are you getting my point? Hello. Yes, thank you. Thank you, Uh, Hemant. so if I am incorrect or somewhere wrong, please see that you can cross question or cross debate, or like you can talk about that, because this is what So, I have done. Yeah. yes, yes. But this is about the distraction during the meditation. But sometimes you Yes.
हाँ disconnected, from your हाँ. regular practices, then what to do in that? Acha, means apart from meditation, when it happens, when you're Yes. angry. See, we since we all are like healers, and we are maximum people are, I think, are practitioners, right? So we all know the technique, but still we don't do it. Even like best of us like are unable to do when we get out of that discipline. At that time, it's the karma which plays the higher role. The क्या बोलते हैं उसको, the amount of anger or distraction, how much it is depends what has happened, what has caused that distraction or anger. If it Means is a it small, may not be anger, but sometimes you get busy with the work and then you are like, disconnected for a few days. Then it can be extended. हाँ हाँ, this happens with me also, right? Because in the last week I had gone through that for 4 days. So it happens, you are unable to perform because your whole mindset is into that something which has distracted or overloaded you with that work, or then your physical problem, that is illness or anything it can be. That time you are unable to, that time one thing you can do, just enjoy that problem. And then maybe, or then you are into that like, suppose if you have, what I had got, I'm telling you, I had got fever, and body was paining very badly. I had food poisoning. So the only thing was I was concentrating on that. Forget everything. आजू बाजू में क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे वहां से निकलना है ना, मुझे उस चीज से निकलना है, वो डिस्ट्रैक्शन से निकलना है. अभी चाहे उसके लिए 2 मिनट लगे या 2 दिन लगे या 4 दिन लगे, तो मुझे तो उससे कैसे निकलना है, और मेरे पास क्या टैक्टिक्स है, मेरे पास क्या अवेलेबिलिटी है उस टाइम पे, दवाइयाँ है या हीलिंग पावर है या जो भी है, हम लोग तो पूरा लगा देंगे ना उसमें. तो उसको डिस्ट्रैक्शन मत सोचिए. वो एक प्रोसेस है लाइफ का, वो एक प्रोसेस है लाइफ का. तो उसके उसको इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा, है ना. तो कर्म है वो तो उसको तो निभाना पड़ेगा. तो उसका कोई इलाज नहीं है. अगर ऐसा होता तो फिर सारे के सारे फटाक से बाहर हो जाते थे. आई वुड से रेदर गो थ्रू इट एंड सी दैट, डोंट फील बैड, और if a good thing happens, too happy about it or anything like that. Go through that process, be it worst or be it best, whatever it is. Are you getting my point, what I'm telling you, man? Yes, yes. Because if you don't go, if you're going to wait for the same thing, what has distracted you, you are going to distract yourself more in that. And then what happens ultimately, what you have, you're losing. That is time, your patience, your mind becomes more angry or whatever, like that situation. There frustration comes. अरे ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ. सो वो सब नहीं होना चाहिए. वो सब आप अगर करोगे तो आप कहीं तो भी उस लेवल पे अटके हो, फिर आगे नहीं बढ़ रहे हो. उसके थ्रू जाओ ना, फ्लो के साथ. रिवर जब फ्लो होती है तो उसके साथ कचरा भी जाता है ना, और बाद में जैसे जैसे कचरा आगे धीरे से निकल जाता है तो वो फिर पानी क्लियर हो जाता है, तो वो रिवर और भी क्लीन लगने लगती है. यहाँ तक कि हम लोग वो पानी पी भी लेते हैं. तो वैसे ही माइंड का भी है. जैसे ही वो क्लीन होगा तो फिर नया एब्जॉर्प्शन होगा, वो अच्छे थॉट्स का होगा, हैप्पीनेस का होगा, इंट्यूशंस का होगा, जो आएंगे, जो पावरफुली, जो वो आपको काम आएंगे लाइफ में, वो होगा. तो उस रिवर में, मतलब वो जो फ्लो में, आपको सब कुछ मिलेगा वापस. तो रोको मत, कुछ भी प्रॉब्लम होता है आने दो ना. क्या होगा, आप कितना रोक पाओगे. अगर आपका लाइफ में लिखा है वो प्रॉब्लम, तो होना है. एक छोटा सा बुखार भी आना है तो आना है, फीवर आना है तो आना है, आप उसको रोक नहीं पाओगे. तो उसके साथ जीना सीखो. सारे संत लोग, भगवान लोग, सबको हुआ है ये सब भाई. हम तो सिर्फ मामूली इंसान है ना. तो हाँ, लेकिन एक है कि हमको जब रास्ता मिल गया है तो रास्ते पे चलने हैं. हम लोगों को रास्ता सिखाया गया है, हमने कहीं अच्छे बुक में जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है कि ये वर्ड्स जो लिखे हुए वो सही है, तो उसको फॉलो करो ना. डिस्ट्रैक्शन किसको नहीं आता है, अनहैप्पीनेस किसको नहीं आता है, हैप्पीनेस किसको नहीं आता है, सबको आता है, सब साथ में चलेंगे. बट
that creating that amount of vacuum, amount of zeroness, meditation, rhythmic breathing, that is most important for your growth. अभी लोग बोलेंगे ग्रोथ, हाँ बाबा, तो आपके लाइफ में क्या सारा ग्रोथ एक ही लाइफ में नहीं होने वाला? बहुत रेयर, देर आर अ फ्यू जेम्स लाइक become saints or self-realized enlightenment. So we are in the queue. Every single man has to go through that. Some may take it 1,000 years, some may 1 lakh, whatever it is. Every man has to reach there. One day he has to leave everything and go into that. So uh, that is why learned people tell you, na, or a proper master will tell you that okay, you are into the process, don't stop, keep going. सो टाइम, यस, ऐसा समझ लो 4 दिन 2 दिन डिस्ट्रैक्शन हुआ, नहीं कर पाए तो छुट्टियां मना ली, ऐसा समझ लो. बट कीप इन माइंड 24 hours that you have to do that again. You have to go to that point again because that is the only highway where you're going to get your realization. है ना? So there are many examples in this, like hundreds of examples. Even food habits, like uh, 10 दिन हम लोगों ने सादा दाल चावल खाया और सडनली इतना माइंड ये अब्रप्ट हो जाता है, आज तो मुझे सारे मसाले खाने ही है. होता है, खा लो, क्योंकि आप सप्रेस करोगे तो रह जाएगा और फिर वापस कहीं ना कहीं ज्यादा कर डालोगे उसे, तो वो ज्यादा हेल्प करेगा आपको. क्लियर योर माइंड, दैट थॉट प्रोसेस. खा लो भैया, हाँ, ओके, अच्छा लगा, ठीक है. उसके वजह से अगर बीमार हुए तो भी चल जाएगा, मैं तो बोलूंगा 1 2 दिन, लेकिन कर लो. पर क्लियर हो जाओगी. अच्छा, उसके बाद एक चीज होती है कि रिजल्ट मिलता है हमको, है ना, कि ये किया इसलिए मुझे ये हुआ. मेरे साथ तो हमेशा यही होता है. अच्छा, ये खाया ना, अब मजे तो कर लिए, फिर उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहो. Then don't like blame the food or then God or then other people for it, because inside everybody knows that you yourself have done it. Yourself also, you know it very well what mistake you have done. So carry on with that. Understand that. Understand the importance of not doing it again. So that will give you a better like window to go into that कि बाबा अगली बार मैंने ये नहीं करना है. तो वो भूल जाओगे आप धीरे धीरे कि मुझे वो चीज को मेरी लाइफ से हटा दे. एम आई क्लियर? Yes. सो ये बच्चे से लेके हर उम्र को ये फेस करना ही पड़ता है. चाहे वो बिजनेस हो, चाहे घरेलू मामला हो, चाहे कहीं बाहर कोई रिलेशन में हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब तो होना ही है. इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, चैप्टर एवरी मोमेंट. And that is why we always discuss that take out some time in the morning, like 20 minutes, 40 minutes, 1 hour, whatever you can to meditate. Sit down, calm your mind, do breathing. The reason is this, because then you are able to like sustain, or then you have that ability to like go through that process very easily. हम सहन कर पाते हैं वो सब और उसको आसानी से पार कर लेते हैं. छोटा माइंड है जो ऐसे ऐसे हाफ के ब्रीथ कर रहा है और हर पल कुछ अजीब बिहेव करता है, उसको गुस्सा ज्यादा आएगा. उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, उसका डाइजेशन लोअर लेवल पे होगा. वो हर मिनट में उसको नए नए प्रॉब्लम्स दिखेंगे, तो ये सब होगा. लेकिन ये प्रैक्टिस से वो कम होते जाएगा, आप स्ट्रांग बनते जाओगे. अच्छा, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी से लेना देना है, फिर प्राणायाम को उससे लेना देना है ना? तो आपको ये स्ट्रांग तो बना रही है, आपका रास्ता तैयार कर रही है. आप कच्चे रास्ते से आ रहे हो, मेन रोड पे, मेन से हाईवे पे जा रहे हो, कर तो रही है. आप समझ नहीं पा रहे हो. अगर समझ पा रहे हो तो आप चालू रखेंगे अपना काम. एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस हैव
been into a state of practice or meditation or pranayam for more than 3 to 4 hours a day, at least once in life, and that person can easily give the answer if there is anyone out of us, like 8 people are there. So Yes, can I? yes, please, sir. I like what I have been working on, but it's not uh, getting completed. But Ah, every 1 hour, I feel that at least 10 minutes let me give. yeah. 20 minutes का है, but 10 minutes का हो जाता. Like Ah, I close my eyes and then I follow this बड़े मंदिर गुरुजी. yeah. तो उनका मंत्र जाप है, हाँ जी. उसको सांस लेते हुए करता हूँ. हाँ So जी. the day I am able to complete for about say 5 घंटे भी 10-10 मिनट निकालता हूँ. So that day is totally different. Different, right? And mostly like when I lie down, it automatically is mantra jap comes to me with the Oh, yeah. breath. Right. And right now I am facing a challenge in my like business as finances mainly. Yeah. I have a debt of about more than 3.5 crores. Oh, But उसके अंदर क्या है कि जो like facing those people, I have a lot of balance, and I tell right. them that this is the situation and Yeah. this is where I am, and whatever they throw on me, and I say it's a blessing because when I went to receive the money, I happily went and received it. So Right. I am at out integrity. Ah, So let me create a balance and complete it. right, sir. ऐसे ही बेटे का मैंने पहले ही बताया कि उसका ना ओसीडी और पार्शियल सिजोफ्रेनिया का हेलुसिनेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है. Ah, right. तो उसके एंजाइटी लेवल जब हाई होता है तो Ah, पहले तो मैं भी रिएक्ट करता था. राइट नाउ आई quietly cool him, hug him, and then I say that I can understand your pain. तो उसको उससे निकलने में आसान हो जाता. And I also told him every 1 hour just 5 minutes sit and close your eyes और ujjayi breathing करो करके. So he is doing Sanatan Kriya every day along with his great. mother. She is trained. तो इससे क्या है कि बैलेंस बनता है. सिचुएशन कुड बी एडवर्स बट आपके इसको समझाने का तरीका ना मतलब ऐसा है कि इवन अ लेमैन, इवन अ चाइल्ड विल अंडरस्टैंड इट. एंड दैट इज व्हाट आई आज मैं दिमाग कल रात को सोच के बैठा था, आपका नाम आया तो इमीडिएटली प्लग इन करूंगा. somehow I got late and Okay. you are a Thank you. wonderful teacher. Thank I you. never knew that. So, but that thing what you told about your son, definitely that is what is there in life. Like, you have to really make them understand. And first, if you are practicing now, you will always know the pain of others. That is a fact. Nobody can deny it. If you have practiced for more than 2, 3 hours a day, or a few days also, you will try understanding other people's pain. क्योंकि वो आ ही जाता है, वो इंटेलेक्ट में कहीं से पैदा हो जाता है. जैसे बोलते हैं ना, दो चार केमिकल्स का अ, मिलन होता है तो एक फॉर्मेशन होता है फॉर्मूला का. वैसा ही माइंड में वो आपके समझ में आ ही जाता है, सामने वाला क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली होना है. और तभी आप उसकी पीड़ा समझते हो, तो आपको गुस्सा नहीं आना है उस पर. तो ऑन द contrary you will try to help him or then sort out the things. आप तभी ये नहीं बोलोगे कि मैं प्रोफेशनल हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ, या ईगो. ईगो भी नहीं आएगा, क्योंकि जो आदमी इतना प्रैक्टिस करेगा उसको ईगो नहीं आएगा. वो नहीं सोचेगा कि मुझे पैसा मिला नहीं मिला, या मैं करूंगा तो उसका ये हो जाएगा. ये सब नहीं आएगा थॉट्स उस मोमेंट पे. वो सब डाइल्यूट हो जाएगा और आप उसको हेल्प कर दोगे या उसको रास्ता दिखा दोगे, है ना. तो वो लेवल पे ही हमको, वही लेवल का इंसान बनना है ना, आगे जाके ऊपर जाना है. तो उसीलिए तो ये सब कर रहे हैं ना. इसका रीजन क्या है ये सब करने का? मुझे ऐसा नहीं है कि भाई घंटी बजाओ, मंदिर जाओ रोज के रोज 10 बार. कुछ नहीं होना है उससे, क्योंकि बाहर आके चप्पल ढूंढते हुए तो हम गालियां देते हैं कितने किधर लात. ऑटो वाला नहीं मिले तो उसको गालियां देते हैं, 2 रुपए ज्यादा लिए तो गालियां दे देते हैं. तो कौन सा मेडिटेशन और क्या क्या बात कर रहे हैं हम लोग, है ना. तो अगर आपका माइंड ही ठिकाने पे नहीं है,
तो फिर क्या मतलब है उसका? तो आप जो कर रहे हो बहुत सही है। द ओनली थिंग, मेरा सजेशन एक ही रहेगा कि आप जो जॉब करते हो उसके साथ थोड़ा सा ब्रीदिंग पे भी ध्यान दो, ताकि आपका जब आप ऑलरेडी बैलेंस्ड हो लेकिन वो बैलेंस और पावरफुल हो जाएगा। बीइंग इन अ डेप्थ ऑफ फ्लोर एंड यूर इन दिस स्टेट, आई एम फीलिंग हैप्पी फॉर यू। आई वुड से पीपल में भी एंग्री और पीपल में से अरे क्या बकवास कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं खुश हूँ। रीजन एक ही है कि आप इस समय भी इतने बैलेंस्ड हो। तो वो बैलेंस, अभी इसमें क्या होगा ना, आपको एक टेक्निक और है, ब्रीदिंग करोगे और आप साथ में जब वो सब कर रहे हो ना, आपका जाप और ये वो सब, तो उसमें एक ही काम हो सकता है कि आपके पास जो इंटेलेक्ट है ना वो थोड़ा और बढ़ेगा, या फिर जो इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। दैट इज व्हाट इज गॉड्स वॉइस, वी ऑल कॉल इट। And definitely you get a solution at that moment. It may take time, it may take 1 month, 6 months, whatever, but definitely you'll get the answer. Right. So we can do that, and that will always keep you like in a balanced situation. जैसे कि दिखावा सबका सामने कि वो नहीं होगा, आप अकेले में उसको आराम से हैंडल कर लोगे। हम लोग कितना भी बोलते हैं मतलब बाहर, लेकिन हमारा अंदर से मन शांत होना चाहिए Correct. to get that answer. So definitely, great. You're going on the right path, and let it become more stronger. Thank you. So yeah, you have to, मैं because अभी this लिख ही is रहा था उनका, like I started writing what I am grateful for, 10 things in a day. yeah, So in fact, I wrote that this conscious group by Shavana Kanji and हाँ, team is, I'm grateful to them because it is delivering so much in my daily yeah, life. तो तभी क्लिक हाँ. हुआ कि आज आपका है करके फटाफट ज्वाइन किया मैंने। Oh, thank you. तो यही Yeah. चीज है, everything is like what you told me, gratefulness and all, like, तो मैं तो कहूँगा किसी ने आपको एक चाटा भी मार दिया तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी में ताकत है मुझे मारने की, मैं कहीं तो भी नीचे हूँ अभी भी। तो मैं उसको कैसे ऊपर लेके जाऊँ, उस लेवल से कैसे निकलूं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट हेट और ऑल दोस थिंग्स। ऑफ कोर्स दिमाग में रहता है, इंसान है, लेकिन फिर भी फॉर द लॉन्गर टर्म यू विल जस्ट थिंक दैट कि इसको इसको मैं कैसे हैंडल करूँ कि ये वापस ना हो, उससे बाहर कैसे आऊं। है ना, हम लोग वही सोचेंगे, क्योंकि और अगर आप वही सोचोगे आपकी उसको पकड़ के रखोगे उस थॉट को, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका किसी ने नुकसान कर जो भी है मतलब, तो होता है, इवन आई हैव गॉन थ्रू दैट फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सो डेफिनेटली ये सब होता है दिमाग में, बट बाद में रियलाइज होता है कि हम लोग गलत रास्ते पे है, हमको ही सही होना पड़ेगा, क्योंकि सब अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। तो पूरा पावर हाउस इधर बैठा है, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। जितना एकांत में बैठोगे उतना सोल्यूशन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और कुछ? इसमें जो 1 आवर आप बोल रहे हैं, 1 आवर ब्रीथ पे कंसंट्रेट करें बैठ के। अ, देखो, अगर आप पास्ट में कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप एक्सीड करते हो टाइमिंग्स, नहीं तो ओके। बिगिनर्स के लिए मैं ज्यादा नहीं सजेस्ट करता मोर देन 10-15 मिनट्स, क्योंकि बेसिकली फिजिकली आप थक जाओगे अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो। क्योंकि जी जी। आप जब ब्रीदिंग करते हो रिदमिक या डीप या वटेवर, अब 10-15 मिनट में आपको एक थकान, ऑफकोर्स एनर्जी जमा हो रही है एक्स्ट्रा, 10 टाइम्स ज्यादा एनर्जी जमा हो रही है, लेकिन तकलीफ ये है कि उस मोमेंट पे आप शायद 10-15 मिनट बाद थकान सा महसूस करके अरे रुकता हूँ, रुक जाऊं तो थोड़ा अच्छा है, तो वो होगा, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं है ना वो। तो हाँ, अगर आप प्रैक्टिशनर हो, आप डेली 10-20 मिनट आप जाइए ना, 1 घंटा क्या 1.5 घंटा जाइए, नो इश्यू। बट रिमेम्बर वन थिंग, दैट यूर स्टमक इज एम्प्टी, एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले खाया हो ऐसे। और करने के बाद भी कम से कम 1.5-2 घंटा ना खाए तो अच्छा है। पानी भी जरूरत पड़ी तो एक से बस है, जहाँ आपकी प्यास बुझ जाए। क्योंकि इसका रीजन है, मतलब अभी मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, ना ही कोई वैद्य हूँ या कुछ भी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ मैं कि ये मैंने किया था। जैसे कि मैंने, देर वॉज अ टाइम व्हेन आई फॉर अ फ्यू डेज आई वाज exceeding 3 hours plus breathing. It was nearly around 2012-14, something like that.
तो मैंने है ना आधे घंटे बाद थोड़ा सा खा लिया था, सहन नहीं हुआ तो एक सिप पानी पी लिया, and it really started paining over here and all things started happening. And mind it, oh, I was responsible for that. I can't blame anyone for that. uh, तो लोग जो बोलते हैं आपको टीवी पे या जो भी मतलब लोग आपको यूट्यूब पे और सब जो बोलते हैं कि आप आधा घंटा मत खाओ, 15 मिनट के बाद ही खाओ, ये सब आई फील इट इज रॉन्ग। मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस बॉडी देगी वही मैं बोलूंगा। मैं बुक से पढ़ के बोलूंगा नहीं, मैं बुक से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, जो हो रहा है वो बोल रहा हूँ। हाँ, आप अगर 15 मिनट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 मिनट के बाद खाओ पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर जब हायर लेवल पे जाते हो, आप 1 घंटा दे रहे हो, 1.5 घंटा दे रहे हो, तो आपका बॉडी को स्टेबल होने को भी तो टाइम लगेगा ना। इंजन जितना गर्म होता है उसको ठंडा होने के लिए उतना ज्यादा टाइम लगता है। आप अगर 5 मिनट पंखा चलाओ, 5 मिनट में ठंडा भी हो जाएगा, और 10 घंटे चलाओगे तो उसको 1-2 घंटा लगेगा ना ठंडा होने के लिए, मशीन को। तो यही हमारा ह्यूमन बॉडी के साथ भी है, तो वो हम नहीं करते। और बाद में जब इनडाइजेशन होता है या किसी प्रकार का ब्लॉकेज होता है या कोई प्रकार का फिजिकल प्रॉब्लम होता है बॉडी में, देन वी ब्लेम द टीचर्स। और देन जो भी हमें बोला था, अरे आप तो बोले थे ऐसा होगा, ऐसा हुआ नहीं। बोला भैया आपने क्या गलती है वो तो बताओ, आपने क्या किया था वो तो कोई खुद क्या करेगा, वो बोलता नहीं है जल्दी इंसान। और इसी वक्त पे टीचर का बोलना बहुत जरूरी है। जो आपका मेंटर है उसने आपको समझाना चाहिए ना उस वक्त पे कि भाई इतना नहीं, इतना टाइम देना पड़ेगा आपको। तो ये यही, इवन मेंटल थॉट्स में भी यही होता है। सब जगह आप अगर कनेक्ट करोगे मशीन्स को, ह्यूमंस को, कोई भी चीज को, सब एक साथ भाग रहे होते हैं अगर बराबर से देखोगे तो। मशीन को ऑपरेट होते हुए देखो, आपको पता चलेगा आपका बॉडी भी वैसे ही ऑपरेट हो रहा है, वैसा वर्षा। वहां वो तेल पी के चालू होते हैं, हम खाना खा के चालू होते हैं। और जो लोग खाना नहीं खाते, हायर लेवल के लोग हैं, वो प्राणायाम करके जीते हैं, मेडिटेशन पे जीते हैं। ऐसे लोग 10-10 दिन खाना नहीं खाते। यहाँ तक कि एक दो तो बीच में आपको बहुत ये हुआ था कि वो कोई थे महाराज जी, वो तो 30 साल से खाना नहीं खाया, बट ही न्यू साइंटिफिकली हाउ टू एक्सट्रैक्ट और एब्जॉर्ब दैट एनर्जी और दैट न्यूट्रिएंट्स, ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट बॉडी फ्रॉम द एयर। क्योंकि देखो आग, हम लोग एक बीज बोते हैं, ये मेडिटेशन का पार्ट है सब्जेक्ट का, अंडरस्टैंड वेरी माइन्यूटली। हम लोग एक छोटा सा बीज जमीन में बोते हैं, ठीक है। वो मिट्टी के अंदर होता है, जो मिट्टी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको काम आती है बड़ा करने में। अच्छा, उसके लिए हम लोग पानी डालते हैं, ठीक है। हम लोग को वो ऑटोमेटिकली जैसे रूजने लगता है या बड़ा होने लगता है, तो उसको ऑक्सीजन मिलता है, एटमॉस्फेयर से सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो चाहिए वो। तो बॉडी का भी वैसा ही है ना, तभी वो बड़ा होता है। तो हम लोग भी वही है, बट these people know how to extract directly from the air. Like I don't know how many people from this group heard about Babaji, Avatar Babaji. If you know, he's living since thousands of years. He knows how to live without anything and everything. He's God himself. So, but that is too high. We can just imagine nothing else. But yes, we can learn so many things from that, and we can be a starter in that process. Because everybody has to reach there at last. So let's start that so that all these small distractions will never hurt you much. रोज का जो झमेला है लाइफ का, वो आपको हर्ट नहीं करेगा ना, जबकि आपका गोल कुछ और ही है। तो हमारा गोल, इसीलिए ये माइंड मेडिटेशन ये सब यही काम का है कि भाई तैयार रहो अगली जर्नी के लिए। तो डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं, आया भी तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए ज्यादा। बराबर है ना सर, तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप आसानी से पार बिल्कुल। कर जाओगे। जो होना है हुआ, क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते ना, अब आगे बढ़ो।
रोते रहोगे तो रोते रहेंगे, फिर वहीं पर अटके रहोगे लाइफ में भी और आगे भी, तो वो मत करो। वो प्लेफुली लो। जो करेंगे वही कंपाउंड करता है, रोएंगे तो वही कंपाउंड करेगा। अब वही बढ़ता जाएगा वो प्रॉब्लम। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो हमको उससे कैसे बाहर आना है उसका ही आंसर देखना है ना एटलीस्ट। हम तो वही ट्राई करेंगे। लेकिन इसी वक्त आपका वो मेडिटेशन काम आता है, आपका प्राणायाम काम आता है, आपको स्टेबल बनाता है उस टाइम पे। ये तो कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग भाग जाते हैं, कितने लोग छुप जाते हैं ऐसे सिचुएशंस में। या कितने लोग जो पावरफुल होते हैं थोड़े से फिजिकली, वो दूसरों पे गुस्सा उतार देते हैं। तो these things happen. It is natural, but if you are higher than that, then you won't do that. You'll always think about like how to manage that balance. So that is the best strategy at that moment. And go again up and up. Like गिरने से अच्छा है ऊपर जाओ। बैंक बैलेंस ही सब कुछ नहीं है, हाँ आज के लिए है, लेकिन फिर भी उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक बैलेंस एंजॉय करने को भी तो आना चाहिए, है तो। वरना उसमें भी वो पैसा भी गलत जगह जाएगा, गलत काम में। तो वो पैसा किस काम का है आपका, आप कभी ग्रो हुए ही नहीं। तो ये सब चीजें है सर। तो डेफिनेटली अगेन वही पॉइंट पे आएंगे हम लोग कि पावर ऑफ माइंड। तो पावर ऑफ माइंड तो आना ही है मेडिटेशन के साथ। और इसमें हर चीज आ गई, मैंने सिर्फ 5 पॉइंट दिए ये नहीं है कि बाबा, अब जैसे मैंने बोला था, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है, इंट्यूशन पावर बढ़ता है, आपका बॉडी हील हो रहा है। अनगिनत चीजें आप जहां देखोगे आप यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे खतरनाक चीज ये है कि जो वर्ड हमारा पावर ऑफ वर्ड रहता है, वो थॉट, उसको बहुत कंट्रोल में रखना है जब आप ये सब करते हो। क्योंकि किसी को गलत बोल के, जैसे कि अभी एक इंसान वहां चल रहा है और वो मुझे कुछ गाली दे के गया है या मेरे साथ कुछ अनबन करके गया और तो बोल दो और वहां पर गिर जाए, आपकी वजह से गिरा है वो, आपको लगेगा कि उसका कर्म का सजा मिला, नहीं, आपका थॉट फोर्स ने उसको शायद गिरा दिया हो, तो आपने वो कर्म जोड़ लिया। आपके हिस्से में डायरी में आ गया हो। So that is why saints and all the learned teachers say that control your thoughts. This is the reason. This is the reason they don't. People say they hide the exercises, secret, this, that. No, Baba. The reason why they do that is this. कि आपका थॉट जब तक बैलेंस नहीं होता, आपका माइंड जब तक स्टेबल नहीं होता है, जब तक उस लेवल पे नहीं पहुंचते, तो ये सब व्यर्थ है। आप कर दोगे उल्टा काम, पक्का। और फिर वो भुगतेगा वो अलग, लेकिन हम पे नया कर्म चढ़ा वो अलग। तो इसीलिए जब आप शिष्य बनते हो किसी गुरु के, तो गुरु पहले यही समझाता है कि बुरा मत करो, बुरा मत बोलो। ये सब क्यों समझाता है वो, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। आपका आपके गुरु जी समझाते होंगे लेक्चर्स में, प्रवचन में। तो यही रीजन ही है, क्योंकि थॉट फोर्स अगर पावरफुल हो गया और आपकी वजह से कोई गिर गया, तो सोचो ना आप। तो आपको भी तो लगेगा ना साथ में बैलेंस, इक्वल 50%। कंट्रोल योर थॉट्स बेटर, use it when it is needed only. So that is what I think. Huh? I don't know about other people, but definitely I think that way. Because this thing is very frankly, like I'm telling you now, I have never opened up, but when I used to practice for these hours and hours, this thing used to happen. इधर बोलो उधर, वो उधर बैठ गया, ये सब होता था। तो रोकने में मतलब आपको मेच्योर होने में टाइम लगता है फिर। और यहीं पे आदमी गलती कर जाता है दैट, अरे आप तो बहुत बड़े संत बन गए, महात्मा बन गए, भगवान बन गए। नहीं भाई, कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ रखा है। तो माइंड बहुत पावरफुल है, उसका सही यूज करो सही जगह पे पहुंचने के लिए। अच्छा, लोगों का तो एक ही होता है कि भाई माइंड सही जगह यूज करो मतलब बैंक बैलेंस बढ़ाओ। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है।
बैलेंस बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए कोई ये नहीं है, खुशी की बात है, लेकिन अगर वो गलत दिशा में गया तो आपको नहीं पता है कि उसके आगे क्या होने वाला है। तो 10 साल भी मिलेंगे, 20 साल, 50, 100 साल बाद भी उसको भुगतना तो पड़ेगा जो उसने किया है। तो बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी, सहन शक्ति बढ़ाओ, है ना। अच्छा, उसी वक्त एक बात है, जैसे कि एक छोटी सी चीज है, जैसे बहुत टाइम से होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि जैसे मैंने चीट, आजकल एक नया प्रोसेस निकला है चीट मील, जैसे 7 दिन डाइजेशन के लिए सब एक्सरसाइज करो, है ना, वो सब करते हैं लोग, और फिर वो चीट मील बोलते हैं उसको, 8वें दिन कुछ तो भी खा लेना, पानी पूरी ये वो। मैं तो बोलता हूँ क्यों सप्रेस करते हो, आपको पसंद है खाओ, आपको पसंद है तो खाओ, लेकिन बैलेंस करना भी सीख लो, बैलेंस नहीं करोगे तो तकलीफ होगी। ओके, तो एम आई बिट क्लियर सर? You're more than clear. So these things happen, and every time you practice, you're going to gain more and more. With your teacher and without your teacher, both you're going to gain if you're on the track. So माइंड का पावर वास्ट है, इन्फिनिट है, आप जो चाहे कर सकते हो। आप यहाँ से पूरा चंद्रमा पे क्या पड़ा है वो भी देख सकते हो, लेकिन आप वहां तक पहुंचना जरूरी है, आपका इंटेलेक्ट, आपका माइंड ग्रो होना जरूरी है उसमें। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए होगा क्या, अगेन प्रैक्टिस। कोई आके ऐसा हाथ नहीं रखने वाला है आपको और बोलेगा हो गया देख ले सब, वो भी होता है, लेकिन आप उतने लेवल के हो क्या, तब जाके आपका गुरु आपके सर के ऊपर हाथ रखेगा। तो आपको उस लेवल पे तो पहुंचना पड़ेगा ना एज अ स्टूडेंट, कि भाई मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि अब मेरा गुरु आए और मुझे सारी दुनिया दिखाए। वो लेवल आने के लिए भी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, उस टाइप के कर्म, उस टाइप का exercise, उस टाइप का मेडिटेशन करना पड़ेगा ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नथिंग इज इजी, बट इफ यू डू इट, इट इज सिंपल ऑल्सो। इफ यू टेक इट एज अ वेरी दिस थिंग, चलो यस आई कैन डू इट, करो, चालू करो बस। तो दिस इज वेयर इट स्टैंड्स, एंड डेफिनेटली एज आई ऑलवेज से कि ये तो सिर्फ 50 मिनट का लेक्चर है। हर मोमेंट एक नया चीज हो रहा होता है, जिसे एक्सप्लेन करना होता है, इसको गो थ्रू करना होता है। तो वो प्रोसेस है लाइफ। तो हर वक्त एक नया एग्जाम्पल खड़ा ही होता है। लाइफ इटसेल्फ इज अ बुक। अभी ऑथर कौन है, कौन नहीं, हम है या दूसरे है, वो पता नहीं, लेकिन ये होना ही है। तो लेट्स डू ओनली वन थिंग, बी ऑन द ट्रैक। So I would suggest every one of us, and maybe those people who may watch this thing in future, so I would say that just start practicing, and it is going to help you. Remember, it is never going to make you fall down or something bad or something like that. On the contrary, you will come out more stronger if you start today. Start meditating, give time for yourself. Don't be unhappy with what wrong things happen. Of course, as a human being, we feel that bad sadness and all those things, but you have to come out of that. Otherwise, you're gone. It will take you into depressions, all these things, and it becomes very difficult, miserable. So, okay, take it happily. चल हो गया, आगे बढ़ते हैं. So that is the way people come out, and definitely we also have to be one of that. Okay. So this is what the mind is, and this is not the end of the lecture. It is just a minute part of it. Okay. So it is, I would say, not even 0.1%, because mind is such vast. So this is only like what we talked for 50 minutes. But as you go on and on and on, thousands of things will come to you which will help you grow. So once again, start meditating, start doing the pranayam, start being stable. That will help you a lot. ओके मैम, ये आपका 1 घंटा पूरा होने आ गया है। थैंक यू सो हेलो। मच जी। सच तो तो ये सब तो चालू ही रहेगा, हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आप टॉपिक सजेस्ट करो जो भी है, और सिंपलेस्ट वे में करेंगे, क्योंकि बड़ी वोकेबलरी से डर लगता है मुझे। यस वेरी फ्रैंकली।
So we'll do that and definitely practically we'll do. कभी ऐसा हो सकता है कि दोपहर को अराउंड 3-4 o'clock, बिकॉज क्या होता है तभी हम लोग सब खाना खा के 3-4 घंटा हो गया होता है, तो वी कैन प्रैक्टिस समथिंग। Yeah, we can do. हाँ, देन बेटर एनी टाइम, लेकिन व्हाटएवर, लेट वी विल प्रैक्टिस इट ना। Okay, ओके, sure, sure. ओके, Yeah. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. या Thank you, everyone. And